Hello all, welcome to the Avigna commerce classes. So in yesterday's class, we learned about introduction, meaning and nature of business economics. So in today's class, we are going to see the scope and objectives of business economics. तो आज के क्लास में अपन स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. So scope of business economics. Scope is nothing but the extent of the area up to which it is applicable. ओके स्कोप जो भी होता है इसका एक हद होता है, वो हद के बारे में अपन आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. बट इन आवर डे टू डे लाइफ द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एक्सपैंडिंग एनॉर्मसली. राइट, क्या हो रहा है बोले तो डे टू डे लाइफ में इसका स्कोप बढ़ता ही जा रहा है. वी कांट डिफाइन दैट up to this level it will applicable and beyond that it will not applicable. It is not happening nowadays because we are expanding in every way. So these are the basic points today we are going to see here. The first one is demand analysis and forecasting. Right, so we all know that demand is nothing but in a particular place, at a particular market, at a particular price, how much quantity of goods are ready to buy by certain consumers or group of consumers is known as demand for that particular product. Alright, so demand D is inversely proportionate with the price. Right, when price increases demand decreases and vice versa. So इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. डिमांड एनालिसिस एंड forecasting is a technique that we use historical data as input to make informed estimates that are predictive in determining the direction of the future trends. तो फोरकास्ट में होता है ये कि यहाँ पे अपना जो भी पुराना डाटा है उसको पूरे तरह से स्टडी करके उस हिसाब से अपकमिंग मंथ्स में अपना प्रोडक्ट को डिमांड इस तरह रहेगा या फिर अपकमिंग क्वार्टर में अपने प्रोडक्ट का डिमांड यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, कौन से एरिया में अपने को फोकस करने का है, ये सब थ्रू दिस फोरकास्टिंग वी कम टू नो. ओके, एंड सेकेंड जो भी है, एंड कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट इज द कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस. So every manager in a company will focuses on the decreasing of the wastage, for minimizing the wastage. So minimizing the wastage is nothing but for decreasing the cost of production as well as the increase in the quality of the production. So manager will simultaneously focuses for the 2 points. So for the first thing is for the cost reduction. All right, and the second point is for the product quality improvement, product quality and as well as the quantity. Okay, so what will happen here is अगर प्रोडक्शन अपन इंक्रीज करें तो ऑटोमेटिकली द कॉस्ट विल कम डाउन. राइट, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस कॉस्ट विल रिड्यूस. तो यहाँ पे
अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अपने को देने के है तो उस हिसाब से उसका कॉस्ट रहेगा। और यहाँ पे प्राइसिंग पॉलिसीज़ भी रहते हैं। दिन थर्ड पॉइंट में अभी अपन वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट पूरा प्रोडक्शन के बारे में रहता है। ऑलराइट, हियर वी डिस्कस अबाउट मेकिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम इट इज़ फर्स्ट स्टेज टू फाइनल स्टेज, यहाँ पे अपन कवर करते हैं। सो एंड इन द थर्ड पॉइंट प्राइसिंग डिसीशंस, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। प्राइसिंग इज़ वन ऑफ द की फैक्टर फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये प्राइसिंग फैक्टर पे ही अपने प्रॉफिट मैनेजमेंट का हिसाब होता है। सी, इफ़ यू वांट टू गेन more profit, you have to increase your price as well as by decreasing the cost of production, then only you can get the maximum profit. All right, तो ये प्राइसिंग डिसीशंस, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस में अपने को 3-4 टाइप्स के प्राइसिंग मेथड्स रहते हैं। तो वो 3-4 प्राइसिंग मेथड्स के हिसाब से कंपनी they will opt one pricing method which will suits them, and they will keep on practicing it from their uh, demand demand for the product. And coming to the profit management, अभी अभी इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। एंड कमिंग टू द कैपिटल मैनेजमेंट, कमिंग टू दिस वन, capital is the one of the initial requirement for every kind of business activity. Okay, तो हर एक कंपनी को रन करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए एंड फॉर एस्टाब्लिश करने के लिए we have the capital requirements, right? There will be two types of capital. So first one is the working capital and second one is the long term capital. So working capital जो भी है अपने डे टू डे लाइफ के लिए या फिर डे टू डे कंपनी को रन करने के लिए जो भी कॉस्ट रहता है वो वर्किंग कैपिटल में कवर होता है। एंड दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल ये किसके लिए यूज़ करते हैं बोले तो फॉर परचेजिंग ऑफ असेट्स के लिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल को अपन यूज़ करते हैं। सो देर विल बी टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। सो वन इज़ द वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड वन इज़ द लॉन्ग टर्म कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल विल बी यूज्ड फॉर द डे टू डे business activities, and this long term capital will be used for purchasing an assets or to put some investments in other companies or in other sectors. तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप है। सो दिस इज़ व्हाट in this slide we have learned so far. So let's move on to the next slide. So here we are going to cover the objectives of business firm. All right, so firm is a part of industry, right? Collection of firms is known as industries. So एक्चुअली क्या रहता है बोले तो एक इंडस्ट्री रहती है, से सपोज टीवी मेकिंग इंडस्ट्री है, तो इसमें बहुत सारे फर्म्स आते हैं लाइक LG, सैमसंग, ऑलराइट, एंड MI, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये फर्म्स क्या करते हैं बोले तो सिमिलर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स वो प्रोड्यूस करते हैं, बट देर विल बी ए स्मॉल स्पेसिफिकेशन इन ईच आइटम व्हाट दे प्रोड्यूस। यहाँ पे होता है क्या है कि LG वालों का एक कंपनी का टीवी रहता है, सैमसंग का एक रहता है और MI का एक टीवी रहता है, एंड हर एक टीवी में थोड़े थोड़े स्पेशलाइजेशंस के द्वारा वो उनको रिलीज़ करते हैं मार्केट में। ओके, तो दिस कलेक्शन ऑफ फर्म्स इज़ नोन एज द इंडस्ट्री। ऑलराइट, तो ये कलेक्शन ऑफ फर्म्स को अपन टीवी इंडस्ट्री बोल के बुलाते हैं।
All right, so this is the difference between the industry and the firm. So coming to this, for firm, they have some special objectives will be there. So first one is best possible use of resources. Of course, it is the one of the main objective of the firm, because if they utilize their best plan for producing any kind of goods, the wastages or the loss which they will get from the product will get minimized. For producing any kind of product, so they have to convert the raw material into the finished goods, right? Finished goods. So if they have better plan, they can minimize the normal loss, all right, as well as they can stop the abnormal loss from arising from the production process. ओके राइट, तो अपने को लॉसेस में दो तरह के लॉसेस रहते हैं, एक नॉर्मल लॉस बोल के रहता है और एक अबनॉर्मल लॉस बोल के रहता है. ये नॉर्मल लॉस अपने डेली बिजनेस में आते रहते हैं और नेग्लिजिबल करते हैं नॉर्मल लॉस को. और अबनॉर्मल लॉस जो भी है, ये ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट के द्वारा होते हैं abnormal loss. So abnormal loss arises because of lack of efficiency in the internal management or lack of efficiency in a production process. So we can eradicate abnormal loss, but while coming to the normal loss, up to certain extent we can eradicate the normal loss, but completely we can't do that. Okay, so coming to the next point, production of supply of goods and services. of course, फर्म्स जो भी रहते हैं उनका एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोल के अपने को नेक्स्ट क्लासेस में उसके बारे में अपन उसके बारे में पढ़ेंगे. तो वहाँ पे आपको क्लियर आउटलाइन मिल जाएगा. यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देके अपन नेक्स्ट पॉइंट को चले जाएंगे. तो हर एक फर्म जो भी है उनके मिडिल मेंस को चूज़ करते हैं. सो देर विल फॉर सम फर्म्स देर विल बी अ डायरेक्ट आउटलेट्स, और थोड़े फर्म्स को मिडिल मैन दे यूज़ करते हैं और देन आउटलेट्स रहते हैं. और थोड़े फर्म्स एक से ज़्यादा मिडिल मैन को यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट कंपनी से मिडिल मैन से जो भी है और बीच में दूसरे लोग रहते हैं उनको फॉलो अप होता है. एंड नेक्स्ट फाइनली द सेलर को मिलता है और सेलर से बायर को यहाँ तक गुड पहुँचाई जाती है. ऑल राइट, सो फॉर सम some type of firms there will be direct outlet, so they don't prefer to put any middlemen in the process. And for some firms there will be one or two middlemen, and for some firms there will be firm and first middleman and second middleman, and then retailer, from retailer to buyer. So this will be the process of supply chain. And the third point is adoption of fair trade policy. of course, ये अपनी कंपनी के लॉन्ग रन पे इसका इफ़ेक्ट बहुत रहता है. अगर अपन मार्केट में बहुत दिन तक सर्वाइव होना चाहते हैं तो वी हैव टू follow the trade policies in a fair manner. So if you want to sustain in a market for a longer period of time, you have to follow these trade policies. So for every kind of business there will be a different trade policies, and we have to fulfill those policies as per the needs of the customers as well as the government. Okay, and the fourth point is creation of customers. Of course, for every firm or every business, customer is a god, right? He will play
center role while coming to the business. अपन जो भी काम कर रहे हैं कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए ही कर रहे हैं, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को बाजू रखते ही अपन न्यू कस्टमर्स के बारे में भी सोचना चाहिए. सो अपने पॉलिसीज़ कैसा रहना बोले तो दे विल सेटिस्फाई और जो भी अपने ओल्ड कस्टमर्स है उनको सेटिस्फाई करते ही अपन न्यू कस्टमर्स को भी इंक्लूड करते जाना चाहिए. तो ही अपना बिजनेस एनलार्ज होता जाता है या फिर उसकी जो भी बाउंड्रीज है वो बढ़ती जाती है और न्यू कस्टमर्स अंदर आते जाते हैं और अपन मार्केट में सस्टेन होते रहते हैं. ऑलराइट, सो दिस creation of customer will play the crucial role for every kind of business activity. So while creating the new customers, we also have to focus on our old customers. Okay, right? So for the old customer satisfaction is much more important because they will automatically spread our product name by seeing our brand name on the related goods or services. And we have to also focus on our new customers, so there will be some kind of strategies. By segmenting the market we can know who are our customers and we can easily target them. All right, तो ये सेगमेंटेशन टारगेट के बारे में अपन नेक्स्ट क्लासेस में अपन डीपली देखेंगे. सो देर विल बी ए स्पेशल चैप्टर फॉर दिस in a marketing also, so we'll be focusing on that too. And last one is profit earning. of course जो भी बिजनेस कर रहा है वो प्रॉफिट के लिए ही करता है और जो भी बिजनेस फर्म्स रहते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बाजू छोड़ के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं. सो हियर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सही पॉइंट रहेगा क्योंकि प्रॉफिट बोले तो सिर्फ बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड रहता है. ऑलराइट, अपन कुछ भी पॉलिसीज़ वगैरह फॉलो नहीं करते और कस्टमर वेलफेयर और जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं उनके बारे में पूरा नेग्लिजेंस रहता है. सो प्रॉफिट अर्निंग में वो सारे पॉइंट्स कवर नहीं होते, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन और जो भी शेयर होल्डर्स है उनका सेटिस्फैक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद अच्छा नाम विच इज़ नथिंग बट द गुडविल प्लेस ए क्रूशियल रोल. ओके, प्रॉफिट अर्निंग जो भी है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस. और ये प्राइसिंग पॉलिसी जो भी है वो प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है एज वेल एज प्रॉफिट प्राइसिंग फैक्टर को इम्पैक्ट करता है. सो दिस इज़ व्हाट वी लर्न सो फार. सो if you have any doubts you can just come down to our telegram channel. The link will be given in the description box. तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स वगैरह है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं. वहाँ पे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओवर देयर वी आर प्रोवाइडिंग daily MCQs also, so you can brush up your knowledge over there. Thank you for the listening. Hope you understand it. And if you have any doubts, you can just join our Telegram channel. We will help you over there. Thank you so much.